Good morning, class 8 children. So, I'm here to deliver my lecture number 2 for Chapter 2 Microorganisms, Friends or Foe. Children, in my previous lecture, I shared with you how these microorganisms are friendly to us. And out of 6 categories, I could discuss only first 4. Now, the remaining 2. The fifth category, it is increasing soil fertility. Now, what is soil fertility? When do we say that yes, the soil is fertile? We can say only if that soil is containing all the minerals and nutrients in a proper balanced form. सब कुछ एकदम तरीके से है, ऐसा नहीं कि one nutrient is high in concentration and the second one is very low. Everything in a proper balanced form. Then we say that the soil is fertile. Under this, I will discuss the example of the microorganism rhizobium, which we discussed in chapter number 1 also. This rhizobium is present in the root nodules of leguminous plants. It stays in the roots of the leguminous plants like pea, मटर की अगर रूट्स देखें तो उसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पर ये बैक्टीरिया लिव्स. अब एक्चुअली व्हाट हेल्प इट इज़ प्रोवाइडिंग टू द प्लांट को एक दिक्कत रहती है, वो कभी भी ना एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. ठीक है, इट कैन एब्जॉर्ब इट इन डिफरेंट अदर फॉर्म्स लाइक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, बट इट कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. So this is the work what rhizobium does. It fixes nitrogen for this leguminous plant, matar ke liye. What it does, it absorbs nitrogen from the air, converts it into nitrites and nitrates and gives it to the plant. And in return, the plant does what? It gives the rhizobium food. So this is a symbiotic relationship, and what type of fixation it is? Biological fixation. So biological nitrogen fixers are the rhizobium-like organisms. I would like to share the picture. You'll be keen to know what are these nodules in rhizobium. अब ये है एक leguminous plant का root, जिस पर you can see the small ball-like structures are there, many balls are there, है ना? So these, ये जो छोटे छोटे nodules हैं, these are this is the place where this bacteria lives. These are the nodules in which the rhizobium bacteria lives. Moving on further, children, whenever you are lingering on here and there, either on the road or on the lane, on your vehicle or whatsoever, you must be watching that we don't have a neat and clean environment. Our environment is disturbed by what? By the garbage, unsettlement of the garbage. Now, some of the people what they do not dispose of their household garbage into the garbage box placed by the municipal committee, but what they do, they place it outside the box. This makes the environment unclean. How? By giving an invitation to number of vectors. कई छोटे छोटे insects, mosquitoes, flies को invite होगा, वहाँ पर invitation होगा. They will sit there, eat that all material. Then if they enter our own house, of course, if they sit on our eatables or wherever the thing which we are going to touch or eat or consume, then yes, we can also suffer from that. Now, what I want you to observe is, like, suppose a biodegradable thing, like let it be a vegetable peel or something, it has been thrown at the site of your house or near the garbage box, dustbin. अगर उसको म्यूनिसिपल कमेटी वाले ने नहीं उठाया, ठीक है, तो आप उस चीज़ को थोड़े डेज के बाद देखेंगे. Let it be 15 days or a month. What will you see? That thing, like suppose it was a banana peel, that banana peel will not be like a banana peel. It will be in a changed form. And who is changing it? It is the microorganisms. Which one? Decomposers. They are the decomposers. जो कि decomposers में वो bacteria and fungus आते हैं जो कि in dead plants and animals को उनको सड़ाते गलाते हैं, उनका decomposition करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनके अंदर जो भी organic matter है, these decomposers, bacteria and fungi, they break it into inorganic material and add it to the soil. अब
सॉइल, उसी सॉइल में जो आसपास प्लांट्स हैं, व्हाट दे डू, वो उसी इनऑर्गेनिक मटेरियल को उठाते हैं एंड दे कुक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस photosynthesis. So this is the function of decomposers. But children, these decomposers are not there for the plastics. That's why we are saying na, stop the use of plastic, ban plastic. क्यों? Because plastic को तोड़ने वाला कोई आता ही नहीं. ऐसे ही 15 days या 1 month के बाद एक प्लास्टिक पॉली बैग, ठीक है, उसको आप देखेंगे जहाँ वो है और अगर वहीं है तो इट विल बी इन द सेम कंडीशन, नॉट एज द बनाना पील विच हैज़ चेंज्ड. तो ये जो प्लास्टिक है इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट डज नॉट डिग्रेड. Moving on further, I want you to conduct again a small activity and share with me in the form of a PPT via email. Address you can ask me personally. बहुत simple है बच्चा. You'll not leave your house, but if you have a kitchen garden or a big pot in your house, dig it, उसमें थोड़ा सा डिगिंग करिए, एक छोटा सा पिट बनाइए और घर में आपने जो फ्रूट्स खाए हैं उनके पील्स या मम्मा ने कोई वेजिटेबल कट की है उसमें से कुछ लेफ्ट ओवर मटीरियल है उसको लीजिए एंड फिल दैट पिट. वंस यू फिल दैट पिट, कवर इट अगेन विद द सॉइल और द लीव्स एंड उसको छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब्ड. चेक इट आफ्टर फ्यू डेज, लाइक पहले 1 week के बाद चेक किया, यू विल सी सम चेंज इन द फॉर्म. Again after like 15 days, then after a month, and finally whenever you are doing this activity, when you are conducting it, I want you to conduct each day pick with the date, or you can say like 15 day देख रहे हैं तो 15th day you will be writing on your PPT with your pick. So इसको conduct करेंगे. It's a very good activity, otherwise children you are not going to do, but I know right now you are at home, it's very easy to perform, but you need to take care of cleanliness of your fingers. You can use gloves to perform this activity. Next, now we are going to study about the category harmful microorganisms. अभी यूजफुल तो पढ़ लिए, ठीक है जी, यूजफुल हैं, but there are so many harmful microorganisms also. One which is nowadays prevalent in our environment, what is it? COVID-19, caused by a virus, SARS virus. अब ये एक वायरस की कैटेगरी है विच इज़ हार्मफुल फॉर अस. सो सिमिलरली लाइक दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ अंडर 3 कैटेगरीज, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. इन 3 में हम इनको स्टडी करेंगे, ठीक है. नाउ अब सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो डिजीजेस नहीं करते ना, बीमारी नहीं लगाते हमें, प्लांट्स को और एनिमल्स को. सो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एक्चुअली cause diseases to anyone, they are known as pathogens, the term highlighted by me in red. So what are pathogens? Disease causing organisms. तो इसमें से first category in humans we are going to study right now in detail, and later on we'll cover the other 2 also, animals and plants. See children, humans, अब हमारे अंदर जो diseases होती हैं they are of 2 types, either communicable infectious or non-communicable non-infectious. Like very simple example, common cold. आपको अगर कोल्ड हुआ है और आपके घर में कोई भी मेंबर या आपके फ्रेंड्स में से आपके नियरेस्ट कॉन्टैक्ट में अगर कोई फ्रेंड और फैमिली मेंबर ही और शी कम्स, what will happen? That particular person will also be suffering from cold. So ऐसा डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है, this is communicable or infectious disease. Some of the examples which are shared in your book: cholera, common cold, chickenpox, tuberculosis. I'll be sharing a little bit about these diseases further. Now what is the medium of the spread? ये disease, ये microorganisms और ये diseases होते कैसे हैं? How these microorganisms enter our body? अभी जो COVID-19 वायरस है वो कैसे आ रहा है? Through the air or through the direct contact. So these are the mediums: air, direct contact, water, food, or the vectors. Now children, what are vectors? Vectors are those organisms which are actually carrying the pathogen. आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो vectors होते हैं, like if I consider an example, your school bus, since it is carrying you from your home to school and school to home, so bus is acting as a vector. ये वो vector है जो एक organism को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, ठीक है. So this is a vector. We'll study further right now. First example,
common cold. Very simple. In this picture you can see that this particular child is sneezing. उसको ज़ोर से sneeze हुआ. तो अब क्या हुआ? स्नीजिंग के वक्त जो हैवी ड्रॉपलेट्स उसके नोज एंड माउथ से निकले वो तो बिल्कुल उसकी बॉडी के पास सेटल डाउन हो गए ऑन द ग्राउंड, बट जो बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट ड्रॉपलेट्स थे और वेरी स्मॉल साइज, दे ट्रैवल्ड, दे आर फ्लोटिंग इन द एयर, वो हवा में तैर रहे हैं, ठीक है. एंड सम ऑफ देम दे सेटल डाउन फार अवे, जिनका थोड़ा सा मीडियम साइज है वो थोड़ा और दूर जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे. सो दिस वे, if we are not covering our face, the nose while sneezing or coughing, this is the medium, the air, how these microorganisms, they spread from one person to another and become infectious or communicable. Next, right now I shared about the vectors and the carriers. This housefly is a vector or a carrier. Is vector and carrier में I'm sharing 3 categories, examples you can say, not categories, examples. See, this is a housefly. Housefly, what it does, it always eats the material from the garbage or fecal matter. गंदी जगहों में ये जाती है और वहीं से अपना खाना लेती है. Now suppose if a fly enters your house and any of your eatable which is uncovered उस पे बैठ जाती है, तो what happens? ये fly, since it is feeding on the garbage and the fecal matter, तो वहाँ से ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ जर्म्स को उठा लाई होगी. दे मस्ट हैव स्टिक्ड ऑन इट्स बॉडी. व्हेन इट विल सिट ऑन आर ईटेबल, तो वहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाएंगे. एंड इफ वी आर कंज्यूमिंग द सेम ईटेबल, तो येस, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल enter our body and we'll be the infected one. So this way it is acting as the vector or the carrier. Next is Aedes, female Aedes mosquito. दिस इज़ द कैरियर. आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट लेग्स वाला आपको दिखता भी है ऐसा मॉस्किटो, ठीक है. वेन एवर मॉस्किटोज कम नियर टू यू, जस्ट चेक, अगर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स वाला मॉस्किटो है, सो इट इज़ फीमेल एडीज मॉस्किटो एंड इट कैन बी द कॉजल वन ऑफ डेंगू, ठीक है. नेक्स्ट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. मॉस्किटोज के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है. वन इज क्यूलेक्स ऑल्सो, बट आई एम नॉट शेयरिंग दैट. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच इज़ अ नॉर्मल वन, ये भी आमतौर पर दिखता है, जो दिन में भी दिखता है. दिस इज एक्चुअली द वेक्टर फॉर द पैरासाइट. एक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, एंड दिस प्लाज्मोडियम इफ इट एंटर्स द ह्यूमन बींग्स इट कॉजेज मलेरिया. मलेरिया पता है ना, चिल्स आते हैं, ठंड लगती है, कपकपी होती है इन द बॉडी, हाई फीवर एंड धीरे धीरे ब्लड सेल्स का बर्स्ट होना and more on, ठीक है. So this female anopheles mosquito, it is carrying or it is acting as a vector for the parasite plasmodium which is causing finally malaria. Now many questions will be arriving in your mind कि why I am mentioning only the female, मैंने मेल क्यों नहीं लिखा, मेल anopheles और मेल Aedes mosquito, because males are only feeding on flower nectar, they do not require human blood. Actually these female anopheles or the Aedes mosquito, when they need their eggs जो इनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, इनको एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए होता है विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है. सो दे सेंस द वार्मथ ऑफ आवर बॉडी एंड दे कम नियरर टू आवर बॉडी, इंजेक्ट देयर प्रोबोसिस, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, और वहाँ से एक छोटा सा होल करते हैं एंड दे सक द ब्लड. अब जब ये ब्लड सक करते हैं तो एक्चुअली ये जो प्लाज्मोडियम है, जो जिसका ये एक वेक्टर और कैरियर बने हुए हैं, ठीक है. दिस प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन देयर सलाइवा, और जब ये अपना प्रोबोसिस इंजेक्ट करते हैं इन आवर स्किन, तो ये अपना सलाइवा भी डालते हैं, ठीक है. तो उसी मोमेंट पर दिस प्लाज्मोडियम, इफ इट इज प्रेजेंट इन द मॉस्किटो, इट कम्स एंड एंटर्स इनटू द हेल्दी पर्सन's ब्लड. सो दिस वे द person will be infected by malaria. Moving on further, how can we prevent? You very well know mosquitoes, they are breeding where? In water. but कैसा water? Running? No, not running water but in stagnant water, जो रुका हुआ पानी है. So आपको क्या करना है, कहीं पर भी आपके घर के आसपास you do not have to allow stagnant water. आपको stagnant water नहीं रखना है. Fine. कहीं पर भी है, like I have mentioned over here, open tires, coolers, or any other place nearby you. And flies, they breed means they lay eggs.
They breed in humid and warm environments. ऐसा environment जहाँ गर्मी है और थोड़ा सीलन भी है, तो वहाँ you must have seen that in monsoons the mosquitoes are at the highest numbers. Why? Because वो appropriate environment है. क्या? एक तो उनको water humidity, एयर में पानी मिल रहा है, प्लस वार्मथ भी मिल रहा है. हीटेड होता है ना मानसून्स, वी फील वेरी हॉट इन दोज डेज. So this is it, the methods to prevent for the flies. It can be just keep your eatables or your house clean and eatables को covered रखिए. Fine. Moving on further, these are some of the diseases caused by microorganisms. Same picture is present in your book. You just need children to cram it. I'm going to share about these diseases right now further, but आपको ये cram करना है. I'm not going to read it word by word. आप please इसको read करिए. Any doubt you face, please ask me. I'm going to discuss these diseases in my further slides. First, tuberculosis, जिसको in short हम कहते हैं TB. This tuberculosis, children please learn these diseases with these diagrams. आपको ये picture जो होता है ना, ये mind में set होता है, and it will be very easy for you to learn. So tuberculosis, it is caused by bacteria, and कैसे? This bacteria is in the air, and if that particular part of air in which this bacteria was there we inhale, तो ये bacteria सीधे enter करता है healthy person के lungs में, and you can see here in the picture they have shown एक red area दिख रहा है in the lungs where this bacteria has colonized, जिसने अपनी एक colony बना ली है. Just see. So it is caused by the bacteria, and how it is transmitted? Through the air. Next, measles. You can see this is a small baby जिसका पूरा body is filled up with small rashes. How these measles are caused? Due to a virus, and they spread through air. Next, now you can differentiate between measles and chickenpox. This is a small baby getting infected with chickenpox, and see the blisters. These are the blisters at early stage. इसके बाद they will be swelling up further. Who is the causal organism? A virus. और कैसे फैलता है? Through the air or the contact. कहते हैं ना, a child or a person who is suffering from chickenpox, he or she should not come in contact of others जिसको नहीं हुआ है. Why? Because contact, physical contact से again it can spread. Next is polio. You can see this child, he is not playing but simply watching others to play. Why? Because this child is infected with a disease polio caused by the virus, and it spreads through the air or water. अगर air और पानी आपने गंदा पिया जिसमें ये वायरस था, तो yes, you will be infected with polio. Although now we are having polio vaccine, तो very less cases can be seen in India. But क्या होता है इसमें? ये जो legs हैं, legs का portion, ठीक है, आपका जो लोअर एब्डोमेन है, इट गेट्स लिटिल बिट श्रिंक्ड, उसके मसल्स वीक हो जाती हैं, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. देयर आर सम डिफॉर्मिटीज इन द लोअर एब्डोमेन. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए. दिस डिजीज इज रिलेटेड टू द लिवर. ये आपके लिवर में प्रॉब्लम करता है. कैसे? लिवर का फंक्शन है फैट्स को तोड़ना, फर्स्ट फंक्शन. तो जब ये जो वायरस है, दिस हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय अ वायरस, एंड गंदा पानी पीने से, ठीक है, इट हैपन्स. तो ये जो वायरस है, इफ़ इट एंटर्स योर लिवर सेल्स, तो ये वहाँ पर लिवर के सेल्स को, फैट्स को नहीं तोड़ने देगा. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम देयर. फाइन. नेक्स्ट, नाउ कम्स द सेकेंड कैटेगरी ऑफ अनफ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एनिमल्स. एनिमल्स के दो डिजीजेस हैव बीन शेयर्ड इन योर बुक. वन, एंथ्रैक्स, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनिमल्स टू अस ऑल्सो. अब इस एंथ्रैक्स में क्या होता है? ब्लिस्टर्स होते हैं, एंड इफ टाइमली नॉट चेक्ड, दीज ब्लिस्टर्स टर्न इनटू लार्ज ब्लिस्टर्स. फाइन. एंड द सेकेंड डिजीज इज फुट एंड माउथ डिजीज. आई एम गोइंग टू शेयर इट राइट नाउ. दिस इज एंथ्रैक्स. यू कैन सी द ब्लिस्टर ओवर हियर. इट्स सच अ डीप ब्लिस्टर, एंड दिस इज नॉट अ सिंगल. देयर आर मेनी ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, and even internally if not healed up timely. Who discovered anthrax? It was Robert Koch. Who? Robert Koch in 1876. So many scientists and their discoveries are coming in this chapter. They should be learnt by you from the point of exams. Who causes anthrax? A bacteria. And how it spreads? Through the physical contact or the air. Next,
foot and mouth disease of cattle. Now this is a cattle जिसका टंग बाहर लिया गया by a doctor. They are just showcasing the disease, foot and mouth disease. This is caused by a virus, and how? By the physical contact. And even हमको human beings को भी हो सकता है by again and again coming in contact with these animals, infected ones. So the ones who are having some pets or some domestic animals, they need to take care of this. Next, coming about plants. Now see, plants are also infected by the microorganisms. Plants में भी diseases होते हैं. अब इनको जब microorganisms they affect, तो what happens? Plant का growth हमें सीधे पता चल जाता है. If there is a plant who is not growing well, poorly developing, then yes, of course, it is being infected by a microorganism. Now we can control the growth of this microorganism by spraying some pesticides or insecticides or some other chemicals also. Example of the diseases shared, there are 3 which I am sharing further. The first one is citrus canker. And I am sure you all must have seen such type of lemons. This is a disease on a lemon, which is citrus canker, and it is caused by the bacteria and how it transfers through the air. Next is your rust of wheat. This is again a disease in the plant. जो wheat है, आटा है, उसके आटा means गेहूँ, उसके जो leaves हैं उनमें जब ऐसे red patches हो जाते हैं, this is the disease called rust of wheat, caused by a fungus, and how it spreads by air or by the spores of the fungus. Next is the last one, yellow vein mosaic of भिंडी, okra. भिंडी जो होती है उसका पत्ता अगर इस तरह से दिखता है येलोइश, जिसमें येलोइश वेन्स एंड ऑल हैं, देन इट इज़ इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस. इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू एन इंसेक्ट, मतलब ये वेक्टर कॉज डिजीज है. यू नीड टू रिमेंबर दिस, येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी. So that's all for today. Please study and understand the lecture.